Hello friend, this is Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों, जैसे अगले वीडियो में हमने देखा था इनफ्लोरेसेंस, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कैलिक्स एंड कोरोला। सो फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो बेटा, this in structure of flower, mainly the flower possess the two part. Okay, one is accessory part and second one is the necessary part beta. So now what are the accessory part? So in accessory part the flower has corolla and the calyx. The flower has calyx and corolla. The calyx is also known as the sepal and corolla is also known as the petal beta. And the necessary part, that is androecium and gynoecium. Androecium is known as the stamen and gynoecium is known as the carpel. Now when we draw the structure of the flower beta, so in flower it is the lowermost part where the flower is positioning, that is known as the thalamus beta. उसको क्या बोलते हैं? Thalamus. And this is the stalk like structure of the flower is known as the पैडी सेल. इसको क्या बोलते हैं बेटा? पैडी सेल. नाउ द आउटर मोस्ट साइड ऑफ द फ्लावर इज possess the calyx. दिस इज नोन एज द कैलिक्स बेटा. इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं. सो दिस इज नोन एज द कैलिक्स. Now, inner to the calyx, it possesses the corolla. This is known as the corolla. So now this is known as the corolla. And inside this it possesses the gynoecium. So this is known as the gynoecium and this is called the androecium. Right beta. Now the first one is the calyx beta. First one is the calyx. So calyx is the outermost part of the flower. It is the outermost part of flower. And this calyx is known as the sepals. The individual or each member of the calyx is known as the sepals. The member of calyx is known as sepals बेटा. कैलिक्स के मेंबर को क्या बोलते हैं? ईच एंड एवरी पार्ट, यानी एक एक जो पांदड़ी होता है बेटा, जो एक एक पेटल्स जैसा होगा उसको क्या बोलेंगे? सेपल्स बोलेंगे कैलिक्स को. ओके. नाउ मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ द सेपल्स. वन इज गेमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस. इफ द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर्स, then it is known as the polycephalus. If the sepals are free from each other, then it is known as polycephalus. तो बेटा पहले है
सेपेलस, दूसरा है बेटा गैमो सेपेलस। तो क्या है बेटा, पॉलीसेपेलस और दी गैमोसेपेलस। सो द पॉलीसेपेलस and the gamocephalus. Polycephalus means the sepals are free from each others. The all sepals are free from each other, and gamocephalus means all the sepals are fused. All sepals are fused. So बेटा उसके एग्जाम्पल देखिए तो यहां पर होगा बेटा द पॉलीसेपेलस इज रेडिश एंड मस्टर्ड is the example of the polycephalus, and in gamocephalus example are cotton, brinjal and tatura are the example of the gamocephalus. Now the next beta कि एक्चुअली हम नोट करके लिख रहे हैं कि इन trapa the sepals are pointed and it converted into thorn like structure. In trapa the sepals are or sepals converted into thorn, यानी बेटा सिंपल ट्रापा में इन ट्रापा द सेपल्स कन्वर्टेड इनटू थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, एंड इन मुसिंडा मुसिंडा में क्या होगा बेटा, तो इन मुसिंडा द सेपल्स इज लार्ज एंड ब्राइट कलर. द सेपल्स only one sepals, one sepals become large and bright white in color for attract the insect, for attracting the insect, and it is known as advertising flag. Beta means only one sepal is become large and it is flying like a flag and it is attract the insect for the pollination, so it is known as the advertising flag. Beta in one sepals it attract the insect, it become large and white, bright white in color. Now types of sepals beta. So types of sepals, first one is caducus. Sepals are fall just opening of the flower bud. So sepals are fall just opening of flower bud. जैसे ही flower bud open होगा the sepals get fall down and it is found in, example, it is found in poppy plant. In which plant beta? In poppy plant the sepals are fall just opening of the flower bud. The second one is deciduous. Second one is deciduous. So in deciduous type what happen? The sepals are fall after pollination. The sepals are fall after pollination. And third one is the persistent. So in persistence the sepals is never fall, it is present in the
fruit also. Sepals are never fall at present in fruit also, and the example are tomato, capsicum, datura, brinjal एंड कॉटन. यानी बेटा आप टोमेटो में देखो नीचे व्हाइट रेड कलर का टोमेटो होता है, नीचे ग्रीन कलर होता है. कैप्सिकम में भी देखो बेटा ग्रीन कलर होता है. तो ये सारे में सेपल्स है वो परसिस्टेंट रहते हैं. फ्रूट बन जाता है फिर भी सेपल्स रहते हैं बेटा. ओके. देन द सेकेंड वन इज दी कोरोला बेटा. सेकेंड क्या है? कोरोला. कोरोला, it is the second rolled of the flower. So it is the second roll of flower present inside the कैलिक्स. यानी सबसे बाहर बेटा क्या होगा? कैलिक्स होगा और उसके अंदर क्या होगा बेटा? कोरोला. The each member of the corolla is known as the petals. The each member of corolla is known as petal. जैसे बेटा यहां पर हम सेपल्स बोलते थे तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? पेटल बोलेंगे. Okay. Now sometime all the petals are similar, then it is known as symmetrical petals. Sometime all petals are similar, so it is known as symmetrical petal. It is known as symmetrical petal means when all the petals are same. Sometime if all the petals are free, then it means different, then it is known as asymmetrical petals. Sometime all petals are dissimilar, then it is known as asymmetrical petal. Means sometime if all the petals are different or dissimilar, then it is known as the asymmetrical petal. सेम में बेटा जैसे यहां पर कैलिक्स में पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस था, वैसे ही यहां पर भी होगा बेटा पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस. पॉलीपेटलस मतलब all petals are free. All petals are free from each other. यानी सारे पेटल्स बेटा एक दूसरे से फ्री होंगे. एंड गैमोपेटलस मीन्स ऑल पेटल्स आर फ्यूज्ड. ओके, दैट इज नोन एज दी गैमोपेटलस. तो यहां पर पॉली पेटलस all petals are free, गैमोपेटलस all petals are fused. क्लियर बेटा? नाउ यहां पर एक नोट करके मैं लिख रहा हूं बेटा, sometime the petals and sepals are fused together, it is known as perianth. Sometime sepals यानी calyx and petals यानी corolla are fused, known as टैपल और पेरियंथ. बेटा क्या बोलते हैं? पेरियंथ. यानी कई बार बेटा सेपल्स और पेटल्स दोनों अगर फ्यूज्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? टैपल्स या फिर पेरियंथ बोलते हैं. सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड कैलिक्स एंड द कोरोला बेटा. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss the estivation, how this corolla and the calyx is arranged in the flower. Thank you.